Hi guys, once again you are welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you how to make calibration procedure for measuring instrument and what are the steps we have to follow for making calibration procedure. So friends, let me continue this video till end. This is the first page of calibration procedure format. Here title calibration procedure, here is company logo, in right hand side document name, issue number and issue date. First step is we have to write purpose of this procedure. This procedure define the method for function of in-house standard room. Next one is scope. This is applicable to in-house facility for calibration of measuring instruments and standard gauges, special gauges, etc. Next one is responsibility. The overall responsibility for the effectiveness of the procedure lies with HOD, quality assurance. Here procedure revision detail. Friends, if any kind of changes is occurred during the implementation of this procedure or after implementation of this procedure, then we have to update the revision history. Here revision date, here revision number and revision history. इस प्रोसीजर में जो स्टेप नंबर 15 और 16 है वो हमने रिवाइज किया है या कुछ उसमें एडिट किया है, तो ये इसका रिवीजन नंबर चेंज हो चुका है 4 से 5. Now in last prepared by, approved by and sheet 1 of 3. It means this procedure is completed in 3 sheets. Now let's move second page of this procedure. In this procedure I have mentioned serial number of activities that we have to followed during calibration of measuring instruments or lay down the calibration procedure. So first step is identify the need for calibration of the measuring gauge oblique instrument. Responsibility is standard room in charge. Executing document QCDF01. Second step is new gauges oblique instrument. यहाँ ये पूछ रहा है क्या ये गेज नया है. If no, then move to third step. Take calibration list of gauge instrument due for calibration and inform all section 1 week before. Whenever you need to collect measuring instruments for calibration, then you have to inform your associate before 1 week. Here the formats we have to follow: QADF01 and QADF02, QADF03 means formats. Here I have to lay down the number of formats we will use for maintaining the record of calibration of measuring instruments. Let's move fourth stage. Collect gauge instruments for calibration 1 day before as per due list and keep in soaking area. Next fourth step is have received all gauges instruments. अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको सभी इंस्ट्रूमेंट मिल चुके हैं एज पर योर मास्टर लिस्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अगर यस है देन यू हैव टू मूव फर्दर. अगर नो है, नो मीन्स कुछ कंडीशंस हो सकती हैं. अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब है वो मिसिंग हो चुका है गेजेस. अगर वो मिसिंग हो चुका है देन यू हैव टू move. Seventh step, next day collect gauge of instrument positively. अगर if next day you not found the measuring instrument, then it means measuring instrument has lost. Then you have to move on point number 8, receiving missing gauge memo. Then move in ninth step is requirement of new gauges. If yes, then move further, we will discuss later. If no, then
move 10th stage, maintain record and file memo. अगर आपको जो खोए हुए इंस्ट्रूमेंट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो आपको जो मेमो रिसीव हुई है उसको फाइल में मेंटेन करें. देन मूव टू 11 स्टेज, प्रिपरेशन ऑफ कैलिब्रेशन गेज इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट बाय ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन. नेक्स्ट पॉइंट इज कैलिब्रेट द गेज इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क इंस्ट्रक्शन एंड चेक शीट. During calibration of the measuring instrument, you have to follow the work instruction of calibration. Next, 13 is gauge instrument within limit. After calibration, you found the gauge is under within limit. Then change calibration sticker again, issue online. If measuring instrument found during calibration out of limit, then here put no and move to section A. सेक्शन ए में आपको बताया गया है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हाउ विल यू हैंडल दैट डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. नाउ लेट्स मूव 16 point number. The second step was is new gauges oblique instrument. If here yes, then inspect the gauge instrument and make IR. IR means inspection report and reporting to BOP department. BOP means bought out parts. Now let's move 17 point. R result okay. After getting a inspection report of new measuring instrument, here 17 point asking are result okay. If no, then reject and with report send to store. अगर वो इंस्ट्रूमेंट एज पर मेजरिंग रिपोर्ट के हिसाब से वो गलत है, आपको उस पर रिजेक्ट का स्टिकर लगा के स्टोर में सेंड कर देना है. इफ़ measuring report of instrument is okay, then yes. 18th point is requirement of issue. अगर इस इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्ट ठीक है, क्या उसको अब रिक्वायरमेंट है इशू करने की? अगर नहीं है तो आपको इसको स्टोर कर लेना है. अगर है देन अगर उस नए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है आपको यूज़ करने के लिए इन शॉप फ्लोर में, देन आपको वो इंस्ट्रूमेंट इशू कर देना है फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन. The 20th point is reject and will report send it to store. It means if measuring instrument report, then we have to come on section A. In next page I will make you understand how to handle section A. It means how to handle the defective measuring instrument. 21st point is keep defective equipment in separate area. अगर आपको कोई ख़राब इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो आपको उसे सेपरेट एरिया में स्टोर करके रखना है, उसका रिकॉर्ड रखना है. इज़ रिपेयर पॉसिबल? नेक्स्ट पॉइंट में वो पूछ रहा है क्या उसका डिफेक्टिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का रिपेयर पॉसिबल है या नहीं. अगर नहीं है देन स्क्रैप इट एंड कीप इन रिजेक्टेड एरिया एंड एंट्री रिजेक्शन फॉर्मेट. इफ इन केस ऑफ यस देन कम टू 23rd पॉइंट. इज़ इन हाउस रिपेयर पॉसिबल? यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना इन हाउस पॉसिबल है या नहीं. अगर नहीं है देन सेंड गेज इंस्ट्रूमेंट टू एक्सटर्नल सोर्स फॉर रिपेयर. आपको कैलिब्रेशन के लिए एक किसी एक्सटर्नल सोर्स को भेजना पड़ेगा. इफ़ यस इट मीन्स रिपेयर द गेज इंस्ट्रूमेंट इन हाउस बाय फॉलोइंग कैलिब्रेशन वर्क इंस्ट्रक्शंस. Come on 25th point. Calibrate the gauge instrument and keep an inspection report. In 26th point he is asking is gauge instrument within permissible limit. After calibration you found instrument within limit or not. If yes then record the observation in history card and
maintain the record. If measuring instrument found out of specific limit means no, then come to the reverse 28th point, scrap it and keep in rejected area and entry rejection format. When you get measuring instrument after calibration from third party, then you have to come on 31 point after repair gauge instrument received back through store memo, and come to the 32 point store memo filing and entry in BOP registered. Then similarly follow the points from 25th. So friends, this is the procedure for calibration of measuring instruments. Thank you.